Good morning, everybody. Welcome to Diamond Group of Institution online classes. Myself, Mohammad Sila, faculty in physics. In the last class, we discussed the magnetism and matter. And the next chapter, today we are going to discuss the next chapter. That name is electromagnetic induction. And according to Pew syllabus, the weightage of this chapter is 6 marks. Okay. Then some basic points we are going to discuss now. As you know already, what is charge? It is the property of a matter which produce and experience electric and magnetic field is called as charge. As you know, there are two types of charges in nature. One is positive charge, another one is negative charge. So far we discussed the five chapters. Okay. Then first one, think charge is denoted by Q. If the charge is at rest, चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन. ओके, एक चार्ज है वो रेस्ट कंडीशंस में है, हम उसका बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द स्टडी ऑफ चार्ज इज एट रेस्ट, सच स्टडीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक. Study of charges is at rest is called as electrostatic, and that we discuss in the first and second chapter. फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? चार्जेस इज एट रेस्ट कंडीशन. आफ्टर दैट वी डिस्कस द चार्ज इज इन मोशन. व्हेन चार्जेस इज इन मोशन, ओके, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज आवर नेम ऑफ आवर थर्ड चैप्टर. वी डिस्कस ऑलरेडी. ओके, व्हेन चार्जेस इज इन मोशन means current will be constitute. The rate of flow of charge is called as current. But for a long period of time, electricity and magnetism are treated as a separate and unrelated subject. But in the year of 1820, the name of the scientist is Oersted. He discovered that, okay, he discovered that when current is flowing through a conductor, magnetic field is produced in the surrounding space. Oersted is the name of the scientist. He discovered that when current is flowing through a conductor, magnetic field is produced in the surrounding space. That concept we discuss in the chapter is moving charges and magnetism. Okay, in our syllabus that name of the chapter is fourth and fifth chapter we discuss. Okay, now the question is rises, is the reverse effect is possible? Can magnetic field produce the electric current? Okay, क्वेश्चन राइज हो रहा, इलेक्ट्रिक करंट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, क्या मैग्नेटिक फील्ड का वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता, क्या बोल के क्वेश्चन राइज हो. इन दिस वे many experiments or many attempt was done, okay, done, and finally found that the reverse effect is possible. Okay, in the year of 1830, the name of the scientist is Faraday and Henry demonstrated the experiment, and he found that electric current is generated in a closed coil by changing the magnetic field. This is the closed coil thing. Okay, closed coil. Okay, current, and this is called as the thing. These cross lines are indicated by the magnetic field. If the magnetic field value is changing, हम magnetic field का values क्या कर रहे हैं? Change कर रहे हैं. For example, okay, 0 बोल के हम think करेंगे 0, 5, 10, 15, 20. Okay, magnetic field value is changing. Then electric current is generated in a closed coil. It is discovered by the, or it is demonstrated by the name of the scientist is Faraday and Henry. This phenomena of generating a current in closed coil, that phenomena is called as electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? Electric current generated in a closed coil by changing magnetic field, by changing magnetic field.
There is one definition. Phenomena in which electric current generated in a closed coil by varying magnetic field is called as electromagnetic induction. Okay, there are some experiments. The first experiment, the experiments of Faraday's and Henry's. The first one, okay, current induced by magnet. How the current is generated in a closed coil by a magnet. Okay, we are taking one closed coil. This is a closed coil. Okay, and we are taking a one magnet. We are taking a one magnet. The magnet has the two poles, as you know already, north pole and south pole. And we are taking a one galvanometer. What is G? G means galvanometer. It is a device which shows the deflection when small current passes through it. When small current is passing in the circuit, then galvanometer shows the deflection. This galvanometer is connected to a coil. Galvanometer is connected to a coil. We are taking one coil and galvanometer and a magnet. The experiment, how the current is induced by a magnet. Okay, look this side. Magnet is surrounding by the magnetic field. As you know, the direction of magnetic field line outside the magnet is north pole to south pole. Okay, outside the magnet, direction of magnetic field is north pole to south pole, and inside the magnet, direction of magnetic field is south pole to north pole. And the magnetic field lines are closed continuous loop. ये कैसा रहता? Closed continuous loop रहता. Okay, magnet is surrounding by the magnetic field. Then these magnetic field lines. Okay, these are the magnetic field lines. Okay, when north pole of the magnet is moved towards the coil, this magnet we are moving. North pole of the magnet is moved towards the coil. ये magnet को हम coil का side में move कर. Then the magnetic field linked with the coil is changed. For example, this one is A point. Think ये magnets को हम इधर से इधर लेके आए B point, North pole, South pole. Again ये magnets को हम shift करके इधर लेके आए C point, North pole and South pole. Magnet is moved from A point to C point. Then magnetic field linked with the coil will be changes. When the magnetic field linked with the coil will be changes, then electric current is generated in a closed coil. That is the definition. Okay, then current is generated in the closed coil. When current is generated in the closed coil means galvanometer shows the deflection. That is the first point. Look this side, simple one. For example, this magnet is moving towards the coil. Okay, then magnetic field linked with the coil will be changes. Current is generated. Current is generated means galvanometer shows the deflection. For example, imagine this is a one person and this is a one table fan बोल के हम think करेंगे. एक table fan. Okay, then fan is on. Think. Then force is acting on the person. Fan on है. Fan on रहने से person के ऊपर क्या हो रहा है? Force act हो रहा. For example, fan is at A place. Okay, some force is acting. For example, force F equals to 1. कुछ तो force act हो रहा बोल के think करेंगे. 1. When the fan is moved towards the person, हम ये fan को person का side में move कर रहे हैं. For example, fan A place से move होके B place पर आया बोल के हम think करेंगे. हम ये फैन को ए से बी पर ला रहे हैं. देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी इंक्रीज. हम इधर से इधर लाए तो फोर्स क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा. सेम फोर्स नहीं रहा. अगेन हम ये फैन को इधर से मूव करके हम सी प्लेस पर लेके आएंगे. देन व्हाट हैपन? अगेन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी इंक्रीज. ओके, फैन नियरेस्ट आया तो पर्सन के ऊपर फोर्स क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा. ओके, द सेम कंडीशन इज हियर. मैग्नेट इज सराउंडिंग बाय द मैग्नेटिक फील्ड. इधर फोर्स का प्लेस में क्या है? इधर मैग्नेटिक फील्ड है.
when magnet is moved towards the coil, magnetic field linked with the coil will be increased. यहाँ magnetic field का वैल्यू क्या हो रहा, changes हो रहा. When magnetic field is linked with the coil is changes means current is generated. Current is generated means galvanometer shows the deflection. That is our first point. When a bar magnet is pushed towards the coil, it is pushed towards the coil. Okay, galvanometer shows a sudden deflection. This coil is showing the deflection. Indicates that current is induced in the coil. First point. Second case. Okay, this magnet, अभी magnet A प्लस से मूव करके किधर आया, C पर आया. Think this magnet is brought to be at rest at C place. हम मैग्नेट को रेस्ट कंडीशन में रख रहे हैं. किधर रेस्ट रख रहे हैं, सी प्लेस में हम रेस्ट रखे मैग्नेट को. अभी मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हम. ओके, इफ द मैग्नेट इज नॉट मूविंग देन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ द कॉइल विल बी कांस्टेंट. इफ द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ द कॉइल इज कांस्टेंट मींस गैल्वेनोमिक करंट इज नॉट जनरेटेड. ओके, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, phenomena in which electric current generated in a closed coil by varying magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो ही करंट जनरेट होता. किसमें, क्लोज्ड कॉइल में. अभी हम मैग्नेट को कैसा रखे, कांस्टेंट और रेस्ट. देन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल इज नॉट चेंजिंग. Magnetic field is not changing means current is not generated. Current is not generated means galvanometer shows the no deflection. ओके, मैग्नेट को मूव किए तो ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा. मैग्नेट को मूव नहीं किए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, देन गैल्वेनोमीटर शोज द नो डिफ्लेक्शन. फॉर एग्जांपल ये फैन है, ये फैन को हम क्या कर रहे हैं, इधर रेस्ट कंडीशन में रखे बोल के हम थिंक करेंगे. देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी कांस्टेंट. कैसा फोर्स एक्ट होता, कांस्टेंट फोर्स एक्ट होता. बट कांस्टेंट हो गया तो इधर क्या हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा. दैट इज अवर सेकेंड पॉइंट. When the magnet is brought to rest, हम मैग्नेट को रेस्ट में रखें, there is no deflection. Okay, there is no deflection in the galvanometer. When the bar magnet is stationary anywhere, हम ये मैग्नेट्स को किधर भी स्टेशनरी रखें, डिफ्लेक्शन आता. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैग्नेट इज प्लेस्ड स्टेशनरी एट ए पॉइंट, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. इफ द मैग्नेट इज प्लेस्ड एट बी पॉइंट, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. If the magnet is placed at C point, galvanometer shows no deflection. Because when the magnet is stationary means, okay, then magnetic field linked with the coil is constant. There is no deflection in the galvanometer. That is the second point. Third point, magnet is moved away from the coil. It is moved away from the coil. Okay, magnet is moved away from the coil. हम मैग्नेट्स को मूव कर रहे हैं. ओके, इट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल. व्हेन मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, देन मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल विल बी चेंजेस. ओके, अभी फॉर एग्जांपल ये फैन को हम पर्सन के साइड में लेके आए, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. बिकॉज हम फैन को किधर लेके आ रहे थे, पर्सन का साइड ले आ रहे हैं. फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा. ओके, इफ द फैन को हम बैक साइड लेके जा रहे हैं, फैन को बैक साइड लेके तो क्या होता, फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी डिक्रीज. द सेम वन है, व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ द कॉइल विल बी डिक्रीजेस. ओके, और चेंजेस. देन गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, which indicates the reverse current in the circuit. That is our third point. When magnet is moved away from the coil, okay, magnet is moved away from the coil, okay, galvanometer shows deflection in the opposite direction. फर्स्ट में हम फॉरवर्ड में लेके गए तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में नंबर आ रहा, हम बैक साइड में लेके गए तो कैसा होता, नेगेटिव में नंबर. थिंक the which indicates the reversal current direct in the circuit. Reversal current in the circuit. Just 3 points hai. Okay, only in this experiment only 3 points. Just look this side. First point,
magnet is moved towards the coil, current is generated in the closed coil, galvanometer shows the deflection. First point. Second point, magnet is brought to be at rest. Magnet को हम रेस्ट कर रहे हैं. Galvanometer shows no deflection because no current is developed inside the closed coil. Third one, magnet is moved away from the coil. Galvanometer shows the deflection but in opposite direction. These are the three. Okay. Second experiment. Experiment number 2. Current induced by current. First one we discussed the current induced by magnet. Second one, current induced by current. Okay. In this case, okay, we are taking a one coil. This coil is C1. Okay. The C1 coil is connected to the galvanometer G. And we are taking a one another coil, that is C2. Okay. Last two experiments we are taking a magnet. Now second experiment, magnet is replaced by the C2 coil. हम magnet को निकालकर C2 coil रख रहे हैं. And this C2 coil is connected to a battery. C2 coil is connected to a battery. When current is flowing in the C2 coil, imagine current is flowing in the C2 coil. Oersted says that when current is flows through a conductor, magnetic field is produced in the surrounding space. Okay. Now current is flowing in the C2 coil means magnetic field is produced in the surrounding space. Magnetic field lines are closed continuous loop. Okay. These magnetic field lines are linked with the C1 coil. Again, same procedure. When C2 coil is moved towards the C1, C2 is moved towards the C1. हम C2 coil को C1 का side में move कर रहे हैं. Okay. When C2 coil is moved towards the C1 means these are the magnetic field lines. Magnetic field lines linked with the coil will be changes. If the magnetic field lines linked with the coil is changes, then the current is induced in the C1 coil. Current is induced means galvanometer shows the deflection. हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स में भी यही पॉइंट था, इसमें भी वही पॉइंट्स हैं. क्या बोल रहा? When C2 coil is pushed towards the C1 coil, okay, C2 को हम पुश कर रहे हैं, किधर पुश कर रहे हैं? C1 का साइड में पुश कर रहे हैं. Okay, the galvanometer shows a sudden deflection which indicates that current is induced in the coil. Current is induced in the coil. First point. Second point, when the C2 coil is, think, this C2 coil is brought to at rest. हम C2 coils को इधर से मूव करके इधर लाए फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में C2 coils को हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट रख रहे हैं. When the C2 coil is at rest means magnetic field linked with the coil is constant. अभी कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होता? कांस्टेंट. अभी एक एग्जांपल्स बताए थे हम, एक पर्सन था, एक फैन था. ओके, हम फैन को पर्सन का साइड लाए तो क्या होता? फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्सन विल बी इंक्रीज हो रहा. ओके, अभी हम फैन को इधर लेके आके स्टॉप किए, समझ लो. फैन को इधर स्टॉप किए तो क्या होता? फैन स्टॉप नहीं, फैन इज एट रेस्ट में रखेंगे हम. फैन इज एट रेस्ट मीन्स कैसा फोर्स एक्ट होता? पर्सन को कांस्टेंट फोर्स एक्ट होता. फॉर एग्जांपल 5 कांस्टेंट फोर्स एक्ट होता. व्हेन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन द C1 coil means galvanometer shows no deflection because no current is generated in the coil. That is our second point. When the C2 is brought to rest, C2 is brought to rest, there is no deflection when C2 coil is stationary anywhere. हम C2 coils को जिधर किधर भी हम रेस्ट पर रखे तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता. एक्ट होने से करंट डेवलप नहीं हो रहा. करंट डेवलप नहीं होता, गैल्वेनोमीटर शोज द नो डिफ्लेक्शन. थर्ड पॉइंट, दिस वन इज सेकंड पॉइंट. दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, C2 coil is moved away
फ्रॉम C1, C2 कॉइल्स को मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम C1. Okay, this is the third point. Then magnetic field linked with the coil will be changed. Okay, then galvanometer shows the deflection but in opposite direction. हम फर्स्ट में फैन को फॉरवर्ड लाए तो करंट का वैल्यूज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, और फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा. सेकेंड में हम इसको दूर लेके जा रहे हैं. ओके, दूर लेके तो इसका वैल्यूज क्या होता है, डिक्रीज होता. डायरेक्शन कैसा होगा हमारे को, अपोजिट. देन करंट डायरेक्शन इनसाइड द C1 coil is opposite. Okay, that is our third point. C2 coil is move away from C1 coil. Okay, C2 coil is move away from C1 coil. Galvanometer shows deflection in the opposite direction. The deflection lasts as long as C2 is in motion. ये कब तक इसमें डिफ्लेक्शन रहता है, जब तक ये कॉइल्स मोशन में रहा. When the C2 is at stationary means no deflection. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेम है, जस्ट हम इसमें एक ही पॉइंट चेंज करें. C2 move towards the coil, galvanometer shows a deflection. C2 is brought to rest, galvanometer shows no deflection. C2 is moved away from the C1, galvanometer shows deflection but in opposite direction. Next experiment, third experiment, current induced by changing current. Current induced by changing current. If you are changing the current, current is generated. Okay, we will discuss. Consider we are taking a one coil C1. Okay, and the C1 coil is connected to the galvanometer G. It is a device which shows the deflection when current flows through the circuit. And we are taking a one another coil, that is C2. Okay, this C2 coil is connected to a battery B and a tapping key K. C2 coil is connected to battery and tapping key. Okay, now if the key is open, current in the circuit is 0. Key is open means current in the circuit is 0. This key is called as tapping key. Okay, this one is tapping key. If key is open, current in the circuit is 0. First point, if the tapping key is pressed, okay, we are pressing this key, press. Okay, if we press the tapping key, pressed means what happen, this key will, the circuit will be closed. If the current is, it is closed means current flow in the C1 coil. Okay, current is flowing in the C1 coil will be increases. This current will be increases. If the key is pressed, then current flowing in the C2 coil will be increases. If the current is flowing in the coil means what happens? Magnetic field is produced in the surrounding space. Magnetic field is produced in the surrounding space. That magnetic field is linked with the C1 coil. हम की को प्रेस किए तो सर्किट क्लोज हो गया. क्लोज हो गया तो सर्किट में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा. करंट फ्लो हो रहा, कैसा फ्लो हो रहा? करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा. फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज होता. ओके, 6 तक इंक्रीज हो गया बोल के हम थिंक करेंगे. करंट फ्लो हो रहा मतलब सराउंडिंग में क्या आता? मैग्नेटिक फील्ड आता. दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विथ द C1 coil. Current value is changing means magnetic field value is also changing. Magnetic field value is changing means and linked to the C1 coil means current is generated in the C1 coil. If the current is generated in the C1 coil means galvanometer shows the deflection. That is our first point. When the tapping key is pressed, okay, galvanometer shows a momentary deflection. Momentary means just seconds के लिए आगे चले जाता. Okay, indicates the current is induced in the C1 coil. Okay, हम की को प्रेस किए तो करंट का वैल्यूज क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा. देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता. लिंक्ड होने से करंट जनरेट हो रहा. इट इंडिकेट बाय दैट फर्स्ट. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड पॉइंट, ओके, की इज प्रेस्ड
हम इसको प्रेस्ड कर रहे हैं, इट इज प्रेस्ड कंटिन्यूअसली, इफ द की इज प्रेस्ड कंटिन्यूअसली, हम एक की को कंटिन्यूअसली प्रेस करके रख रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रेस करके रखे मतलब क्या होता है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, constant current is flowing in the circuit. If constant current is flowing in the circuit means constant magnetic field is linked with the circuit. Constant current flow हुआ तो constant magnetic field क्या होता है, इसको linked होता. If constant magnetic field is linked with the circuit means current is not generated. Current is not generated means galvanometer shows the no deflection. That is our second point. If the key is pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. Third point. Okay, third one. We are writing here. It is, key is released. अभी हम एक की को क्या कर रहे हैं, क्लोज किए थे, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हम इसको ओपन कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट में की को प्रेस किए, सेकंड में कंटिन्यूअसली प्रेस किए, थर्ड में क्या कर रहे हैं, हम रिलीज कर. इफ द की इज रिलीज्ड, then current in the circular C1 coil will be decreases. अभी हम इसको ओपन करने के बाद में, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता. ओके, डिक्रीजेस, then magnetic field linked with the coil is also decreases, then magnetic flux is changes but in decreasing order, then current in the circuit will be what happen, decreases, then galvanometer shows the deflection but in opposite direction. Okay, opposite direction. Okay, opposite direction. Then that is our third point. When the key is released, galvanometer shows a momentary deflection in the opposite direction. हम की को प्रेस कर रहे हैं, then galvanometer में momentary deflection आ रहा है. हम की को continuously प्रेस कर रहे हैं, galvanometer में no deflection. When the key is released, galvanometer shows the deflection but in opposite direction. That is the third one. Next topic, Faraday's law of electromagnetic induction. Most important for 3 mark or 2 mark question. Okay, Faraday's law of electromagnetic induction. It is based on the experiment. Just we discuss here. Okay, what is the first law? First law says that whenever there is a change in magnetic flux linked with a circuit, EMF is induced in the circuit. Whenever the magnetic flux is changing, EMF is induced in the circuit. Okay, induced EMF exists as long as change in magnetic flux continues. Just we discuss in the experiment, we are taking we discuss the 3 experiments. Okay, first one is magnet and coil, we discussed that. Okay, this one is called as galvanometer. Okay, when the magnet is moved towards the coil, what happens, magnet is surrounding by the magnetic field and the magnetic field lines are passing through the coil. Number of magnetic field lines are passing through the coil is called as magnetic flux. In 4th chapter we discussed that. Okay, when the magnet is moved towards the coil, okay, galvanometer shows the deflection. Galvanometer shows the deflection means what is the meaning, current is generated in the coil. Current is generated in the coil means EMF is developed inside the also coil. Okay, EMF is developed in open circuit as well as closed circuit, but current is generated only in a closed circuit. Current only closed circuit में generate होता, EMF closed में भी generate होता and open में भी generate होता. Okay, EMF or also it is called as potential difference or also it is called as voltage. Okay, current is flowing in the circuit means potential difference is developed. Current is flows from higher potential to lower potential. Current कैसा flow होता, higher to lower flow हो रहा current. Okay, when magnet is moved, current is generated. Galvanometer shows the deflection. This means that current generate हो रहा मतलब potential compulsory रहता, potential रहा तो ही current generate होता. Okay, and the current कैसा move होता, higher to lower. When the magnet is brought to be at rest, galvanometer shows no deflection. This means that okay, the induced EMF exists as long as change in magnetic flux. जब तक ये flux changes हो रहा,
ओके तब तक ईएमएफ क्या होता, डेवलप होता, ये चेंज होना स्टॉप हुआ, ओके देन द ईएमएफ इज नॉट डेवलप इनसाइड द कॉइल, दैट इज द फर्स्ट लॉ. Okay, second one, the magnitude of the induced EMF is in a circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Magnitude means size. Okay, किसका साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, साइज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit. इंड्यूस ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना फ्लक्स चेंज हो रहा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा. ओके फ्लक्स, वंस अगेन व्हाट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, ओके इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. अभी हम मैग्नेट को मूव किए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स. थिंक दिस इज ए पॉइंट, okay what is the magnetic flux here, phi 1. if it is move and brought to at this place, हम ये मैग्नेट को इधर से मूव करके इधर लेके आए, बी पर लेके आए बोल के हम थिंक करेंगे, देन फ्लक्स का वैल्यू फर्स्ट में कितना था, phi 1. सेकंड में क्या होता, फ्लक्स वैल्यू इज चेंज्ड, देन हम क्या लिख सकते हैं, phi 2. ओके जस्ट हम एग्जांपल्स बताए, एक पर्सन है, एक फैन है बोल के हम एग्जांपल्स बताए. व्हेन फैन का वजह से पर्सन के ऊपर क्या आ रहा, फोर्स आ रहा, फॉर एग्जांपल F1 इक्वल्स टू 1 बोल के थिंक करेंगे. ये फैन को हम ए प्लेस से मूव करके हम किधर लेके आए, बी प्लेस पर लेके आए, फैन इधर से इधर आया, पर्सन का नियरेस्ट में है फैन अभी, देन फोर्स सेम रहता, क्या नहीं रहता, फोर्स क्या होता, चेंज होता. फोर्स चेंज हो रहा मतलब ऐसा ही क्या हो रहा, मैग्नेट को मूव किए तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, phi 1. अभी मैग्नेट इधर आने के बाद उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता, phi 2. द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके वो चेंज के ऊपर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड, दैट इज द कंडीशन वी आर राइटिंग. इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. इफ वी रिमूव द डायरेक्टली साइन वी गेट द के. negative sign indicates the okay induced EMF is always opposes the change in magnetic flux. इसमें जो EMF डेवलप हो रहा वो अपोज कर रहा, किसको अपोज कर रहा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रहा, अपोज कर. ओके देन K is called constant of proportionality. K equals to, we are writing its value is 1. then we can write E is equals to minus d phi 1 by phi 2 by minus phi 1 by t. then next for a small change in magnetic flux, just change हो गया, then the what is the formula, E equals to minus d phi by dt. for example if this coil has a n number of turns, इसमें बहुत सारे टर्न्स है बोल के हम थिंक करेंगे, then we are writing E is equals to minus n means number of turns, d phi by dt. this relation is also called as Newman's relation. it is important for 1 mark question. write the expression for Newman relation, then we can write it.